Hi all, welcome to RS Educorner. तो हमें last class रे discuss करथिले about some questions with their depth concept related to control and coordination. तो हमें तार second part भी बने थांते but कहीं जने comment करथिले जे zoology रो हमरो last time जो CST रे question पढ़िथिला ସେଇଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଟା ସେୟାର କରିଦେବା ଦରକାର ବିକଜ ବଟନୀର ତ ଆମେ ବହୁତ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ ତ ଜୁଲୋଜିର ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବା ଉଚିତ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବିକଜ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରର ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ ଅଛି ଆମେ ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ିବା ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଇବେ କି ସବୁ सिलेबस रे जहाँ भी टॉपिक अच्छी केमती इच टॉपिक को सेमन टच करचंते एंड बड़ कथा हला you will be associated with the difficulty level of the questions okay तो क्वेश्चन नो डिफिकल्टी लेवल केमती रहउची को लेवल रो क्वेश्चन आसुची सो सेटा आपनको हेल्पफुल हे पारे हम भाबुची सो दैट्स व्हाई आई शेयर दिस एंड होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू ओके तो स्टार्ट करबा हमें फर्स्ट क्वेश्चन नु तो एटा फर्स्ट शिफ्ट रो अछि सेकंड शिफ्ट रो भी मु शेयर करबी या परे तो फर्स्ट शिफ्ट रे हमर जूलॉजी रो जहा क्वेश्चन पडिथिला तो तार फर्स्ट क्वेश्चन थिला दैट वाज हमर 130 जाइथिला बॉटनी रो क्वेश्चन देन 131 आसी गला who was the first person to describe the blood circulation in the body okay so here are name of some scientists तो जेते भी हमारा साइंटिस्ट का नेम एठी देइची मु भाबुची दोस ऑल आर पॉपुलरली नोन बिकॉज हमारा लुई पास्चर को हमें जानिचे रिलेटेड टू हमारा पास्चराइजेशन रिलेटेड देन मेंडल को हमें जानिचे मेंडल होचंते हमारा कोन जोटा हमारा जेनेटिक्स थिला ता रिलेटेड देन एडवर्ड जेनर हमर जे होचंती से कोन ना हमारा जो वैक्सीनेशन पई स्मॉल पॉक्स पई जे वैक्सीन बाहर करथिले तो से होचंते हमारा एडवर्ड जेनर देन बाकी रहिला हमारा विलियम हार्वे ओके सो विलियम हार्वे मु आपण माने को डायरेक्ट आंसर भी कहि परथांती बट एटा टिके जेहेतु मन पके देली कोडी हमर जति स्मॉल पॉक्स के बाहर करथिले बोली हु डिस्कवर्ड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स ए क्वेश्चन जति भी पके दिए देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट ही वाज एडवर्ड जेनर so right option for this question is option D that is William Harvey clear then come to next question the normal systolic pressure is about dash अच्छा हमें जानू छे हमरो दीटा हमर जो बीपी जोटा हमें बीपी चेक करू जे बा ब्लड प्रेशर हमें जो चेक करू जे सेथरे कोन हमर दीटा जिंस थाए गोटे हला हमर सिस्टोलिक okay systolic then another one is diastolic okay diastolic okay तो systolic टा हमर होची कोन ना सेटा हमर जोटा होची हमर कंट्रैक्ट करि जिवो बा जाकी हे जिवो जोटा प्रेशर जतले कमी जाए तो जाकी हे जिबा को सेटा जते बेले कंट्रैक्ट करि जाउची सेटा होची हमर सिस्टोलिक एंड जते बेले अगेन सेटा हमर कोन होची ना रिलैक्स हे जाउची रिलैक्स हे गेले कोन बेलूनटा हमर जेंदी फुली फुली जाउची दैट इज मोड ऑफ रिलैक्स तो रिलैक्स टा को हमें कहबा डायस्टोलिक तो मोड ऊपर तो फाइनली हमें कहूचे जे सिस्टोलिक मींस कंट्रैक्ट हबा हार्ट हमर कंट्रैक्ट हे जाउची एंड डायस्टोलिक मींस रिलैक्स हे जाउची ओके तो सिस्टोलिक रे हमर सब बेले प्रेशर रहे केते ना 120 ओके तो सिस्टोलिक रे हमर 120 रहे कोडी अछि ना हमर ऑप्शन बी एंड डायस्टोलिक हमें जदी देखिबा दैट इज 80 ओके से पे हमर बीपी कोन देनी 120/80 ओके so 120 mm of Hg is your right option. Then come to next question. Which of the following action is of parasympathetic nervous system? Okay. तो just control and coordination रा मो last time देखो बने थिली वीडियो टा देखो दुईटा क्वेश्चन आसी ची एंड एथर को बेसिक क्वेश्चन भी आसी पारे बिकॉज़ जेहेतु
आपण मानकर कोन कंटेंट पोर्शन टा बढ़ी जाईची से लास्ट टाइम कोन थिला 20 थिला सेति पई दुईटा क्वेश्चन आस्थिला बट दिस टाइम बहुत क्वेश्चन आसबो ए चैप्टर रु तो एटा टिके भल से देखिबे चैप्टर टा ओके तो से जाओ हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ने वी हैड डिस्कस पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम मन पड़ुची पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमर कोठी थिला ना जोटा हमर एएनएस ओके ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जोटा हमर पीएनएस अंडर रे आसुची पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अंडर रे आसुची ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम सेथिरे आस्तला हमर सिम्पैथेटिक आउ पैरा सिम्पैथेटिक तो क्वेश्चन हमको देइची कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम रो एक्शन आमे जदी देखिबा इनहिबिट सलाइवेशन जमा भी नुए बिकॉज इट कॉजेस सलाइवेशन हमर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जोगु ही सलाइवेशन हेई थाए तो इनहिबिट ता केबे भी होबनी देन रिलैक्स एयरवेज एंड रिलैक्स ब्लैडर टू सम एक्सटेंट दीज आर करेक्ट बट द राइट ऑप्शन इज कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल ओके तो कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल कहिले हमर देखंतु एटा हमर रहेला सपोज दिस इज आई तो आई भीतर हमर एम्ति गोलटे रहउची तो गोल भीतर आ गोटे ब्लैक टा रहउची ओके तो एटा हमर कलरफुल रहउची आकु हमें कहउचे आइरिस दिस इज आइरिस एंड ए जोटा भीतर हमर जोटा ब्लैक रहिला दैट इज कॉल्ड प्यूपिल ओके प्यूपिल तो से कौन कहउचे ना कंस्ट्रिक्ट हबो जोटा हमर कंस्ट्रिक्ट मींस कोन हमर दीटा जिंस हुए हमर जेते बेले आमे कोनोसी जिंस देखि थाउ सेते बेले कोन हुए ना हमर आखि रे तो जेते बेले आमे कोनोसी जिंस देखि थाउ कोन हुए हमर ना गोटे हुए हमर डायलेशन हुए आ गोटा हुए कंस्ट्रिक्शन हुए ओके तो डायलेशन होज कोन हमर जेते बेले लाइट टा कम हे जाउची ओके तो लाइट जेते बेले कम हे जाउची आमे सेते कोन करछे ना हम आखिटा देखिबा कोनोसी जिंस लाइट कम अछि आमे ठीक से देखि पारुने देन आमे कोन करबा ना हम आखिटा ऑटोमेटिक बड़ बड़ हे जिवो आमे ताको भल से देखिबा पाई ओके सो दैट इज कॉल्ड डायलेशन ओके ऑन द अदर हैंड constriction is the opposite of dilation okay तो constriction case रे कोन होचे ना हमर माने कर बेसी लाइट हे गेला कोन हमें आखि के एंती छोटो छोटो करनोचे कि माने जोटा मिंजी मिंजी करनोचे आखि की जोटा कहउचे सो दैट इज constriction okay and भलसे मन रखो dilation is the action by sympathetic nerve and constriction is the action of parasympathetic nerve okay it's also an important question. So, right option for this question is your option D, that is constrict pupils. Clear? Then come to next question. In the neurons, the cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called देखो मुझे तेल control and coordination कहिथिली मुझे एटी कहिथिली मेंशन करथिली हमरा जेते बेले पढौथिली न्यूरल रो स्ट्रक्चर टा जोटी बुझौथिली मेजल्स ग्रानुल्स मन थिबो मु कहिथिली सेटा जे हमरा फर्स्ट शिफ्ट रो पढिथिला सीएसटी रो सो लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 134 इज दैट क्वेश्चन बिकॉज़ एटी देखो देइची जे हमरा सेल बॉडी कोडा हमरा एक्शन रो स्ट्रक्चर टा को मन पका ए भली जो थिला ओके एमते हमर थिला तलटा थिला हमर एक्सन एंड एटी जो बॉडी उडा थिला एरा सब ब्रांच स्ट्रक्चर थिला दैट वाज डेंड्राइट्स ओके तलटा थिला हमर एक्सन थिला आ एटा थिला हमर सेल बॉडी तो ए सेल बॉडी रे एमती ग्रे कलर रो सब येलो येलो देखैथिले ओके सब एमती बॉडी उडा थिला ग्रानुलर बॉडीज थिला सो दोज आर कॉल्ड एज nasal granules okay nasal granules so your question is in neurons the cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies is called nasal granules okay then synaptic nerves नुआ आपनकर swan cell भी नुआ एटा सब प्रीवियस वीडियो टा देखि देबे ता स्ट्रक्चर जानि मन पकि देबो कोट हमर एटा जेमते होतला कोन एक्सन होतला एटा अनब्रांच स्ट्रक्चर टा एक्सन होतला एमती एंड एक्सन ने हमर सब सॉरी एक्सन होतला हमर देन एक्सन ने हमर कोन सब एट देखि दउची एक्सन ने हमर कोन होतला ना एट सब एमती सेल रहउतला ओके माइलिन शीथ तला देन ता भीतर हमर एटा सब स्वान सेल थिला
देन लास्ट को हमर एट थिला सिनेप्टिक नर्व कोड थिला जो ए भली जगह रे हमर एक्सन टा जो टर्मिनल एंड थिला से टर्मिनल एंड रे गोटे नर्व लाइक स्ट्रक्चर थिला दोस वे synaptic nerves. Okay, so right option for this question is your option B, that is nasal granules. Okay, a part टा टिके भलसे मन रखिया because most of the times and most of the competitive brain do and your structure of neuron do question almost ase. Okay, so be clear about that. Then next question, the cytoplasmic membrane surrounding a vacuole is, okay, तो vacuole को surround करथिबा जदि आमे कहिबा cytoplasmic membrane, that is tonoplast, we all know. Okay, tonoplast because amyloplast हेले हमर कोन हैला amylo, if we will discuss about amyloplast, तो amyloplast हमर होची कोन ना colorless plant plastid that forms and stores starch. तो एटा हमर starch store करे and a chloroplast तो हमें समस्त जानी छे that is responsible for photosynthesis. Then if you will talk about leucoplast, then leucoplast are also plant plastid to store oil. Okay, so amyloplast is to store starch and leucoplast is to store oil. Okay, and tonoplast are the bounds and tonoplast हमर होची कोन ना chief vacuole of and tonoplast होची हमर कोन ना गोटे cytoplasmic membrane जोटा कि हमर vacuole को surround करी थाए. Okay, then next question, what is chromatophores? Okay, तो जानिथिबे एटा chromatophores कहिले these are the plastids like coloring bodies of BGA, blue green algae रे हमर मिली थाए कोनटा ना हमर chromatophores टा. Okay, तो क्रोमाटोफोर हमर होची कोन ना बीजीए रे हमर तार इंटरनल स्ट्रक्चर को जदी देखिबा बीजीए को. ओके, ता भितरे हमर सब एम्ति प्लास्टिड गुडा थिबो. ओके, so those are called as pigments. Chromatophores are the pigments which are found at the internal organ of the BGA or blue green algae. And why these chromatophores are occur, or what is the function of these chromatophores in BGA? Then these are to adjust the coloration to its surrounding. तो coloration करिया पई help करे. Why? To protect from their enemies and for mating behavior. तो ए दिटा function पई ही सेमानकर chromatophores थाए कार हमर BGA blue green algae. Clear? The next question, what does Lincoln index measure? Okay, तो Lincoln index हमर जोटा सेटा कोथिरे हमर यूज करा जाए कोनटा हमर मेजर करिया पाए ना ऑलवेज हमर मन रखिबे पॉपुलेशन साइज. जेतेले हम इकोलॉजी पढुचे तो इकोलॉजी रे हमर थाई पॉपुलेशन साइज देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट हम जानि छे जेनेटिक डिस्टेंस म्यूटेशन देन पॉपुलेशन साइज सब हमर आसी कोथरे इकोलॉजी रे आसी. तो इकोलॉजी रे हम पढिचे उटे पॉपुलेशन साइज. ओके, तो पॉपुलेशन साइज रे हमर कोन हुए ना पॉपुलेशन साइज हम माने मापिया पई हमर गोटे लेखा जाय फार्मूला देखिबो दैट इज p इक्वल टू n1 into n2 divided by r. Okay, so your p is size of the population. Okay, p टा हमर होची size of the population, p is the size of population here. Then n1 is the size of the first sample, then n2 is size of second sample, and r is your recaptures in second sample. तो second sample ला हमर जोटा recaptures हे थाए. तो एटा होची हमर कोन फार्मूला हमर population size मापिबार. Okay, so for that your Lincoln index is used. So right option for this question is population size, option C. Okay, and genetic drifts or genetic distance is सब mutation. I think you all are associated with these terms. Mutation तो हमें समझते जाने चाहिए हमारा जोटा sudden change हवा हमारा genetic behavior रे. Okay, so change in DNA sequence, that is mutation. And genetic drift जदि कहिबा हम shortly टिके कहि दउ जे एटी टिके जस्ट मन पके दउची
बिकॉज कंटेंट पढ़िया टाइम नथिबा आपण मानम पाखरे तो मु जस्ट शॉर्टली मन पकई दउची जे जेनेटिक ड्रिफ्ट्स कहिले नंबर ऑफ फ्लक्चुएशंस इन नंबर ऑफ जीन वेरिएशंस ओके तो आमर कौन हो छोट आम पढ़ी थे जो इकोलोजी मन पकातु जो आम जेनेटिक बैरियर किसी आसी जाऊँगी मझीरे तो गोटे पॉपुलेशन गोटे जगह रही जाउछंती आउ किछि पॉपुलेशन आउ गोटे जगह को पळै जाउछंती ओके सपोज जन हमर जंगल रे अछंती किछि एनिमल अछंती एंड हमर कोन हैला ना मझीरे आसिला कोन बैरियर आसिला ओके तो अर्थक्वेक आसिला कि किछि हैला तो बैरियर हे गला परे हमर कोन हैला ना लेफ्ट साइड रे किछि रही गेले एनिमल एंड राइट साइड रे किछि रही गेले पॉपुलेशन ओके तो एपटे जो पॉपुलेशन रहिले लेफ्ट साइड रे से माने कोन करिवे ना सेपट को जाई परिबेनी राइट साइड को जाई परिबेनी तो एमती रही रही से माने कोन करिवे तो लेफ्ट साइड रे जो माने रहिले से माने कोन करिवे ना जेतेबेले तांकर रिप्रोडक्शन करिवे दे विल मीट to the population they will intramit means तांको population भितरे जो सब तांकर तो से माने कोन करिवे ना इंट्रा ब्रीड करिवे मींस तांकर सेही पटे लेफ्ट साइड रे जो पॉपुलेशन रहिले तांको भितर तांका कैटेगरी रो जो एनिमल अछंदी से माने तांको सहित मीट करिवे तो सेमिति हमर राइट साइड रे भी जो एनिमल रहिले से माने कोन करिवे ना तांकर सेम कैटेगरी रो जो एनिमल रहिले और ऑर्गेनिज्म रहिले तांको सहित भी से मेट करिवे और रिप्रोड्यूस करिवे तो एमिति हे कि कोन हबो ना हमर गोटे टाइम आसीबो जो टाइम रे हमर देखो सेम एनिमल ओके सेम ऑर्गेनिज्म एखाडी थिबे बट बैरियर पर अलगा हे गले अलगा हे जिबा जोगु से माने कोन गले ना परस्पर सहित आ मिसि पारलेनी तो एमिति गोटे किछि टाइम आसीबो सपोज आफ्टर 100 इयर्स और एमिति बहुत वर्ष परे गोटे टाइम आसीबो से माने कोन जेनेटिक चेंज एमिति हे जिवो जे हमर ए साइड रे जो ऑर्गेनिज्म थिबे से माने बी साइड रो ऑर्गेनिज्म को सहित आउ रिप्रोड्यूस करि परिबे नाही ओके सो सेटा कोन हैला हमर ना गोटे साइड रे गोटे ड्रिफ्ट हे गला जेनेटिक ड्रिफ्ट हे गला तांकर जीन ने से सेम ऑर्गेनिज्म ओके बट तारो जीन ने चेंज आसिला नंबर ऑफ फ्लक्चुएशंस आसिला ओके देन हमर जेनेटिक डिस्टेंस जदी कहबा सेटा कोन हमर ना जेनेटिक डाइवर्जेंस बिटवीन पॉपुलेशंस भीतर मेजर करिया पई यूज करा जाए ओके सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज an example of aquatic ecosystem very easy question अपन देखंतु aquatic ecosystem means forest नु grassland नु the desert भी नुहे then हमर आसिला estuary okay the estuary is the right option and estuary कोन होची मु कहि दोची estuary टा हमर को इकोसिस्टम ना जोठी हमर नदीटा समुद्र रे मिसे ओके हमर मैंग्रोव फॉरेस्टर का जो जगह देखा जाए बेसी देखते नदी जाके हमर सॉल्ट वाटर आउ फ्रेश वाटर जो एरिया रे मिसंती सेही जो इकोसिस्टम टा हमर देखा जाए जो एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड एज एस्चुअरी ओके देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन read the following statement regarding genetic drift and choose the correct options okay तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एबे मु कहिले आपण मानकू तो से कहूची कोन क्वेश्चन ना जेनेटिक ड्रिफ्ट डिस्क्राइब द रैंडम फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ एडा मु कहिले बे रैंडम फ्लक्चुएशन एबे मु कहिले जस्ट ओके तो रैंडम फ्लक्चुएशन इन नंबर ऑफ जीन वेरिएंट्स इन पॉपुलेशन दिस इज राइट देन हमें जदी कहिबा genetic drift takes place between occurrence of variant forms of a gene called alleles increase and decrease by chance over time एडा भी ठीक बिकॉज आमर ओवर टाइम रे समय अनुसार ही समानकर alleles सब चेंज होउची ओके सो दैट्स व्हाई बोथ द ऑप्शंस आर राइट ओके सो करेक्ट आंसर for this question is option A, that is both I and 2I are true. Okay. Then which of the following occurs when a species separates into two separate groups which are isolated from one another? Okay. तो देखो से कहूची हमर एटा चले असला एटा भी इकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन तो से कोन कहूची ना हमर देखो एटा इकोलॉजी रो तीनटा क्वेश्चन आसी गलानी ओके तो इकोलॉजी को हमें एते माने सस्ताटा भाबिबानी से तो तीनटा क्वेश्चन आसलान देखंतु then which of the following question when a species separate into
टू सेपरेट ग्रुप्स ओके तो स्पेसिएशन कथा हमर आसी गला स्पेसीज टा सेपरेट होउची इनटू टू सेपरेट ग्रुप्स मींस कोन स्पेसिएशन ओके तो स्पेसिएशन आमे जानि छे केते टाइप 5 टाइप्स हमर स्पेसिएशन हमर होउची केते टाइप ना 5 टाइप्स तो एटी 4 चारटा देइछ हमर स्पेसिएशन हमर गोटे होची फर्स्ट स्पेसिएशन जदी आमे देखिबा एलोपैट्रिक देन हमर सिम्पैट्रिक देन हमर पैरापैट्रिक देन पेरिपैट्रिक देन आर्टिफिशियल ओके तो हमर जस्ट टिके टिके हिंट्स दे दोची एलोपैथिक कहले हमर ज्योग्राफिकल बैरियर जोगु जो स्पेसिएशन टा हेइ थाइ जेंति आपनकर जेनेटिक ड्रिफ्ट रे कहले हमर गोटे बैरियर आसिला कोन जंगल ले हमर अर्थक्वेक हैला जंगल टा फाटी गला मझिरु तो एपड़ एनिमल सेपट को जाई पालेनी सेपड़ एनिमल एपट को आसी पाले नाही किबा केही तांकर सेम कैटेगरी सहित भी रिप्रोड्यूस करि पाले नाही ओके सो दैट इज एटी कोन हला माने गोटे स्पेसीज रो स्पेसिएशन हे गला सो दैट काइंड ऑफ स्पेसिएशन इज कॉल्ड योर एलोपैट्रिक स्पेसिएशन ओके देन आर्टिफिशियल स्पेसिएशन या टर्म रो मन जाना जाउची जे हमरो अच्छा वन थिंग आई वांट टू क्लियर यू देखो सबुठु इजी जिनस हला हमरो स्पेसिएशन हमें आके बुझिबा हला स्पेसिएशन होच कोन ना हमें स्पेसीज गुडा को हमरो को वे रे सब अलगा हे जानती जा फल कि से परस्पर सहित माने निज निज कैटेगरी सहित आ मेट कर पारंतनी बस से माने आउ दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस और टू मेट विथ देयर सेम कैटेगरीज ओके तो सेटा हला हमर स्पेसिएशन तो स्पेसिएशन वर्ड रो आमे बाकी ता सहित जा एलोपैट्रिक हेले हमर एरिया रिलेटेड मींस ज्योग्राफिकल बैरियर आसीथिबो देन आर्टिफिशियल कहले हमर एटा ह्यूमन को द्वारा हेतिबो जोटा हमर आमे जोटा करूची हमर एक्सपेरिमेंटल करूची जो फ्लू को नै कि सब फ्लाइज एमन को सब नै कि आमे करू नै दैट कम्स अंडर आर्टिफिशियल स्पेसिएशन देन पैरापैट्रिक आउ पेरिपैट्रिक ए दुटा को हमर नियरर हमर कोन हेतिबो ना सेम पॉपुलेशन ओके गोटे टिके भल से बुझिबा what is the difference between parapatric and peripatric okay तो parapatric रे हमर कोन होउची ना both parapatric आउ peripatric रे हमर कोन हेतिबो ना दीटांक हमर तो both peripatric आउ parapatric रे हमर कोन होउची ना गोटे हमर पॉपुलेशन रु सेइटु गोटे एरिया रु सेइटी सेम काइंड रो स्पेसीज थिबे बट तांको भितरु आउ गोटे नीचे नीचे बुझছো तो नीके जोटा हमर कहंती ओके तो एनिमल हमर जोटी रहला ताको हमें कोन कहिले हैबिटेट कहिले तो कोन होची ना गोटे जत्ते बेले पॉपुलेशन टा हमर गोटे एरिया रे रहूची एंड दैट इंटरैक्ट्स विथ इट्स एनवायरनमेंट दैट मींस से ता पाखरे जो तार आउटसाइड रे ता एनवायरनमेंट रे बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स जो सब रहिले तांका सहित केमिति इंटरैक्शन करिवो केमिति रहिवो तो ए सब को नबार कंसीडरेशन कला हमें ताको को जोटे एनिमल नीच और एनिमल नीके कहूचे ओके नीचे भी कहंदी नीके भी कहंदी तो आपण माने जहा करंदी से कहंदी से अनुसार बुझिबे सो हमर कोन होजे जेमति मु कहली हमर एटी ज्योग्राफिकल बैरियर आसी गले हे गला कोन एलोपैट्रिक हो गला ओके तो माने कर हमर सेम गोटे जंगल अछि एंड जंगल ले गोटे हमर वोल्केनिक एरप्शन हैला ओके तो वोल्केनिक एरप्शन हैला मींस से जगह रो किछि पशु पक्षी हमर दूरे गले एंड जो जगह रे वोल्केनिक एरप्शन हैला सेटा जेते बेले कूल हबो अगेन से जगह रे हमर पुणी गोटे जंगल आउट रे स्टार्ट हबो फॉरेस्ट आउट रे स्टार्ट हबो सेठी तो किछि एनिमल कोन करबे जो माने मेन जंगल ले थिले सेतरो किछि कोन करबे हमर से जो एरिया रे वोल्केनिक एरप्शन हेइथिला से माने कोन करबे से जगह को पळेबे आ किछि तांगर मूल जगह रे रहिबे से माने जिबे नाही ओके तो ए भलिया कोन हेले ना से माने दीटा तांकर नीचे अलगा हे गला ओके तो दुई प्रकार नीचे बने देले एंड समय क्रमे कोन हबो दे can't reproduce with each other okay से माने तांको सेम कैटेगरी सहित रिप्रोड्यूस करि परिबे नाही ओके तो ताकू हमें कहूचे पेरिपैट्रिक ओके एंड पैरापैट्रिक भी से सेम जिंस सेटा भी सेम दे हमरो गोटे नीच रु इवॉल्व हेतबो आ गोटे छोटो नीच जोटा कि हमरो मेन जो ऑर्गेनिज्म हमरो मेन नीच रे थिबे से माने दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस विथ द न्यूली फॉर्म नीड्स ओके तो सेटा हला हमर पैरापैट्रिक तो हमर पेरिपैट्रिक आ पैरापैट्रिक भितरे
मेजर डिफरेंस है पेरिपैट्रिक जोटी सेटा टिके डिस्टेंस बेसी थिबो मींस हमर जोटी जेमति कहली वोल्केनिक एरप्शन डाला सपोज जंगल टू किछि दूर रे हेछि तो एठू किछि पशुपक्षी सेठी पळै चंती ओके और आमे जदी कहबा कि जंगल भितरे बा जंगल लो बहुत जंगल भितरे हमर वोल्केनिक एरप्शन टा हला जा द्वारा से जंगल लो पाखरु किछि एनिमल अलगा हे गले सो दैट इज कॉल्ड एज parapatric. So this was the major difference between peripatric and parapatric. So clear yourself. Okay, then come to our question. Which of the following occurs when a species separate into two separate groups which are isolated from one another? So that is allopatric. Okay. Then come to next question. Blood flows into your kidney through the direct question. Amara blood flows into kidney through renal artery. Okay, kidney related means the renal, no? Then next question. Towards the center of the inner concave surface of the kidney, okay, is a notch through which ureter, blood vessel and nerves enter, called, that is called your hilum. Okay, option A dekhe do. The next question, the transmission of characters from one generation to the next or the phenomenon of offsprings to inherit the parental traits is known as, देखो आमरा कोच कोन ना phenomenon of the offsprings to inherit the parental trait. Very easy. Parental traits means amara heredity or कोन in heredity. Okay, easy question na. Amara character transfer over to next generation means that is heredity. Then come to next question. A genetic change in which piece of one chromosome breaks off and attaches to the another chromosome is, that is translation. Okay, inversion नुहे, deletion नुहे, duplication नुहे, ए सब वीडियो टा टिके लेंदी हे जाउची सो शॉर्टली टिके मु डिस्कस कर दोची. आमे क्रोमोसोम चैप्टर रे ए सब डिस्कस करबा इन्वर्शन कोन, डिलीशन कोन, डुप्लिकेशन कोन. तो जस्ट जेहेतु हमर ट्रांसलोकेशन टा होउची हमर कोन राइट ऑप्शन एट देखंतु. सपोज हमर एटा हला क्रोमोसोम. Okay, suppose this is one chromosome. Okay, then this is another chromosome. Okay, तो कोन हबो ना आर एटू खंडे जाईकिरी या धरे जोडी हे जिवो और यार ए खंडटा जाईकिरी या सहित जोडी हे जिवो. ओके, तो एठी कोन हबो ना नुवा गोटे क्रोमोसोम हमरो जो तयारी हबो सेटा को आमे कहिबा. सपोज एटा हमरो येलो थिला एठी माने कर रेड सहित आसी जोडी हे गला. तो एटा को आमे कहिबा कर दोची मु. तो सपोज एटा हमरो येलो थिला देन आउट जदि आमे देखिबा हमरो ब्लू थिला. ओके, ब्लू टा खंडे छिंडिगिरी एठी या सहित ब्रेक हे गला परे आ सहित लागि छ. ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसलोकेशन. ओके, लोकेशन. Then come to next question. Which of the following component of food is known as body building food? एटा जानि छै हमें समझते. Protein is the body building food. So option D is the right option. Then question number 146. The germ layer ectoderm gives rise to which of the following structure in humans? Okay, तो human रे कोन हुए ना हमरो germ layer जो थाए सेटा हमरो gives rise to मन रखिबा nervous system. Okay, nervous system को ही डेवलप करथा है हमरो germ layer टा. Then next question. Which cells secretes male sex hormones testosterone? Okay, तो testosterone हमरो
जो मेल हार्मोन रहिला को सेलटा सेटा हमर सिक्रेट करे ना दैट इज लेडिक्स सेल मन रखिबा खाली लेडिक्स सेल then eukaryotic cells Krebs cycle takes place in mitochondria very easy question okay then in Krebs cycle citrate is isomerized to the secondary alcohol isocitrate by the enzyme okay तो हमर Krebs cycle रो मु गोटे अलगा वीडियो बनेबी Krebs cycle टा एक्चुअली हमर हेडा केमिति समस्या कहि कि तांको मन रखिया गोटे बढ़िया ट्रिक अछि तारो तो सेइथिरे आपनकर सब आसी जीवो भी एंजाइम सब सेटा मु गोटे वीडियो तार बनेबी बहुत जल्दी बने देबी जोटा कि आपनको Krebs cycle रो कांसेप्ट भी क्लियर हे जबो एंड रिलेटेड टू Krebs cycle all questions will be cleared okay so आपनकर कोन कहूची क्वेश्चन ना citrate is isomerized to the secondary alcohol isocitrate okay so that is occurred by the enzyme or which enzyme is responsible for that is aconitase okay then last question which of the following option is correct regarding classical taxonomy okay तो classical taxonomy को आमे जदी ध्यान दे रखिबा then कोडा हमर ठीक हेबो ना species is considered and said to be dynamic entity that is not right then evolutionary relationship of organisms are included in taxonomy that is also not right then species is considered as a basic unit or can be called a fixed entity okay so option C is your right option taxonomy is based on the post Darwin period that is also wrong okay so right option for this question is option C clear so in the next video we'll discuss the zoology questions of shift 2